Kashmiri. So this is very important. These notations and training our kids, children. Yitis kalas na ispanin shuren lagten bachan yimzan kashir never winkenas chi. Yitis kalas na istiman yiman chizan pata emphasis karo. It can ishwana gut. How will he understand this? Because he does not know the sound. It is not there in Devanagari. It is not there in. There are many ways now to basically add it, but he is not. He is confused. That's why sometimes he writes Ghat or Jabi, whatever. Achikasan, Arthas, Anarthpat. And I want to really congratulate all the team, Core Sharda team, and also Sanjeevani Sharda Kendra. Again, I'm saying, because this book is the first book ever which has been made scientifically. It took us almost more than 1 year. We have witnesses here who have seen the journey of this book, each and every figure, each and every name, whatever, for each alphabet, how we have come. For few people, it may be just a primer, but it is a beginning. It's a stone for us. It's a sani khatrak brandich ak herpo. That is where we start. Our Core Sharda team is always working on the roots, always working on connecting us back to our roots, connecting us back to what we come from. I don't want to speak much because we have much enough in store for today's program. Today, I want to honor Dr. Professor Sudhir Sopory ji as a chief guest for this program to inaugurate our book. And just an introduction about Sopory ji. Professor Sudhir Sopory ji is currently working in SERB, Government of India, Distinguished Fellow and Senior Emeritus Scientist at an International Scientist at Genetic Engineering and Biotechnology, New Delhi. He has obtained his PhD in 1973 and has also been a Vice Chancellor in Jawaharlal Nehru University. There's a big introduction about you, sir, but I want to just make it sharp. In fact, when I got your profile, it was so elaborate. When I looked at your qualification and your achievements, I think it was enough. But yes, it's an honor for us to have you as a chief guest for this program. And we would like to listen from you, sir, about if you can just first inaugurate this book, right, this pious occasion, and then we would like to hear from you, sir. Thank you, Rakesh. Should I release the book first? Yes, we can release the book, Mara. Yes, then we can hear it from you. Perfect. So this reached me on time. Yes, just 2 days. Yes, 1.5 days. Thank you. Very nice printing. Thank you, Mara. I think at the outset, I must thank Team Sharda, Rakesh Kolji, for making me a part of this important event. In fact, I am really privileged to release this book, which just was mentioned by Rakesh Kol, how much effort it has gone through in order to prepare this book. And to release this book in the august presence of Ms.Bhasha Sumbli ji, whom everybody knows, and also Dr. Chamalal Raina, with whom I have been in touch on and off, because he's one scholar who writes so much, even at this age. He just sent me one of his latest book to have a look at it. So I'm really amazed that in our community, we have such stalwarts who still carry on with the traditions of Kashmiri. My heartiest congratulations to the editors, Sunil ji, Veronica ji, all the team members which you listed on the slide here. I think it's a great effort which you have made to bring this
volume for the younger people, not for younger people. Even I would be one person who would start now reading. I think at this age, I better now learn this. मेरी भी कश्मीरी उतनी ज़्यादा नहीं है, because my parents, mother was from Lahore. they वो पुराने कश्मीरी थे जो निकल चुके थे, and they had almost forgotten language, but she was remarried in Kashmiri family. But वो सारी tradition जो language की है वो mother से ज़्यादा आती है. तो language को सीखने के लिए जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ग्रामर की जरूरत नहीं होती है. वो जो सुनता है, घर में जो बातचीत होती है उससे वो सीख जाता है, लैंग्वेज सीख जाता है. बट लैंग्वेज को फिर उसको मॉडिफाई करना, ग्रामर सीखना, वो एक बात की बात होती है. लेकिन इवन टू स्पीक द लैंग्वेज, आई थिंक इट नॉर्मली गेट्स इम्बाइब्ड by through the parents, and that is something which at present is missing in many of our families, especially those who have come out in 90s. कश्मीर में भी गया था मैं, वहाँ तो जो हमारी वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो भी अब कश्मीरी लैंग्वेज बहुत कम बोलती है. उनसे कश्मीरी में बात करें तो उर्दू में ही जवाब देती है. तो दिस लैंग्वेज नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड. Why this is a great effort, I think. The value of this project which you have undertaken, to me, is to be realized from the perspective that in this country we have, as per the census which was done, roughly around 780 languages. And out of these, almost like what is remaining, what we speak is only about 30 or 40 languages which are there. And even from independence onwards, which I was reading, about 257 languages have been lost. And according to UNESCO, any language which is spoken by less than 10,000 people is marked as an endangered language, potentially endangered language. अब ये सोचना है कि ये जो शारदा है ये तो कितने लोग बोलते हैं, तो मेरे ख्याल में तो इसको तो extremely endangered language के कैटेगरी में यूनेस्को डाल सकती है. जब तक हम कश्मीर में थे, कई लोग थे जो शारदा में काम किया करते थे, शारदा लैंग्वेज में. मैंने आपके कुछ वीडियोस भी सुने हैं राकेश जी, आपके ग्रुप के वीडियोस आपकी साइट पे हैं. एंड एज यू राइटली मेंशन कि उस जमाने में हमारा जातुक वगैरह जो था वो शारदा लैंग्वेज में ही बना करता था, लेकिन उसको पढ़ने के लिए फिर हमें उन्हीं के पास जाना पड़ता था, बताइए जी इसमें क्या लिखा हुआ है. सो देयर वर वेरी वेरी फ्यू पीपल who could really read this language, understand this language. The numbers was really minimal. But कई लोगों ने इस पे काम किया, वहाँ पे बोलते थे. One of the person I know very well, was also a relative, is Professor पृथ्वीनाथ पुष्प जो थे, उनको इस भाषा का काफी ज्ञान था. मुझे याद है कि आपने सुना होगा महेश्वर राजदान का नाम, वो स्वामी लक्ष्मण जी के को पढ़ाते थे. And he was very good in this Sharda language. उनका एक केस आता है कि एक जब उनकी डेथ हुई तो स्वामी लक्ष्मण जी उनके पास गए थे, तो उनके जो फिरन था उसके अंदर कुछ एक कागज निकला, और उस कागज में कुछ लिखा हुआ था which was actually in Sharda language. Even Swamiji did not know this language. So he kept that paper in his book, in his pocket. और जब उनका सब कुछ हो गया, he gave it to Prabhaji, who lives with us, his disciple. उनको कहा इसको बाद में कभी translate करवा लेना. But the situation went so on that this paper remained for a long time. Only after 1990, when she came from Srinagar on one occasion, we all went to Pushpiji. हमने कहा इसको बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है. So that was the case, you could not understand this language. When he translated it, he said, this is a gem, piece of a gem, where he has given देवी की पूरी स्तुति उसने लिखी हुई. वो अब हम अपने जो मैगजीन है हमारा यहाँ कश्मीरी सेवक समाज का, उसका नाम भी हमारा शारदा तरंगनी है उस मैगजीन का, तो उसमें इसको हम थोड़ा पब्लिश करने जा रहे हैं. और उसमें जो महेश्वर राजदान जी ने जो लिखा था एंड का, उन्होंने ये लिखा था कि एग्जैक्टली डिसाइडेड कि मुझे देवी के दर्शन हुए. दिस वाज रिटन इन शारदा लैंग्वेज, और मैं अब इस समय पे अपना शरीर त्याग कर. सो दैट वाज द लेवल at which these people had reached through this language by reading, writing and practicing which was done there.
अब इस लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस मैं देख रहा था एक डिस्कवरी चैनल में 2003 या 2004 के पास एक उन्होंने एक प्रोग्राम लगाया था, डाइंग लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, languages which are not being used and they will disappear from this planet for a period of time. उस टाइम जब वो प्रोग्राम चल रहा था उसमें उन्होंने 1 मिनट के लिए शारदा का जिक्र किया, कहा कि ये एक लैंग्वेज है which is so important but it is slowly vanishing. और लास्ट में वो कहते हैं कि they mentioned that hopes someone someday would take up its cause. तो ये डिस्कवरी चैनल ने लिखा था 2003 में। तो मुझे लगता है आज 2022 18-19 साल के बाद कहीं ना कहीं टीम शारदा जो आपकी है, को टीम राकेश कोल जी, रनौजिका जी, आप सब लोग ने, मुझे लगता है कहीं देवी की कृपा ऐसी हुई आप लोग के कि उसने कहा कोई तो उसका कॉज लेगा और आपने वो कॉज लिया और उसका आज पहला स्टेप हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। The पहला स्टेप इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट। कि जब बच्चा चलना शुरू करता है ना, खोगजी करांच बट उसके बाद जब उसने पहला स्टेप लेना होता है, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप बिकॉज दैट इज द वेवरिंग पॉइंट। तो वो जो पहला स्टेप आप ले चुके हैं थ्रू पब्लिकेशन ऑफ दिस बुक, मुझे लगता है नेक्स्ट स्टेप मे बी लिटिल डिफिकल्ट बट यू हैव सेट द बेस फॉर moving ahead in order to bring this language to more people, not only to just study it, but as you know that there is so much of literature which exists this in language. संस्कृत लैंग्वेज में तो है ही, हमें संस्कृत भी नहीं आती, शारदा की तो दूर की बात है, लेकिन एक समय है हमारे यंगर जनरेशन के लिए, उनके पास टाइम है, मैं भी टाइम निकालूंगा because I'm very much keen interested in this language. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब मैं था तो हम लोगों ने इसके ऊपर एक कोर्सेज स्टार्ट करवाए थे। उस वक्त डॉक्टर कपरू आए थे हमारे पास एंड सम पीपल, डॉक्टर हीरालाल वांगनू एंड शशि शेखर तोशखानी, इन लोगों ने मिलके कहा था कि हम शारदा पे करेंगे। देयर इज वन प्रोफेसर गिरीश झा जो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स पे काम करते थे। तो आई थॉट विद दोस न्यू टेक्निकल एड्स वी शुड बी एबल टू पुश दिस लैंग्वेज फर्दर। बट उसके बाद शायद कहीं ना कहीं वहाँ पे थकाव आ गया, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी टीम वो थकाव में नहीं आएगी और इसको, इस जो आपने बीड़ा उठाया इसको आगे करने का, वो आगे तक चलता जाएगा। और लैंग्वेजेस का इतना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी संस्कृत में, हमारे शैविज्म में, हमारी जितनी भी प्रथा है, हमारी संस्कृति है, अभिनव गुप्त वगैरह जो भी है, जिसमें लिखा है कि लैंग्वेज जो है वो शिव के थ्रू ही बनाई गई है। हमारी संस्कृत लैंग्वेज है, ईच अल्फाबेट हैज एन एनर्जी ऑफ इट्स ओन, और हाउ डिफरेंट एनर्जीज मीट इन ऑर्डर टू मेक डिफरेंट अल्फाबेट्स। तो ये पूरी जो है वो थियरी ऑफ अल्फाबेट है हमारे शास्त्रों में, शैविज्म में। और मुझे लगता है कि उसके बेसिस पे अगर आप इस भाषा को देखेंगे, शारदा को, तो मुझे लगता है कई और डीपर थॉट्स उसमें से निकल के आएंगे। तो एक बड़ा अच्छा काम जो आप लोगों ने किया है, मुझे उम्मीद है कि इसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हमारी तरफ से कुछ, मैं इंटेलेक्चुअली तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट एज ए फाइनेंशियल सपोर्ट, इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू, आई वुड बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन टू डू दैट, and whatever little contribution I can do, because I'm interested in AI case में भी उन्होंने कहा they wanted to go for Kashmiri language and I supported and all that. मैंने कहा कुछ तो आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कई बारी शुरू में तो एक enthusiasm रहता है कई लोगों का, but over a period of time it dampens. वो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो आपकी strong team है इसको होने नहीं देगी, क्योंकि लैंग्वेज हमारे, जैसे मैंने कहा, कल्चर में, हमारा शहर में बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल है। और जैसे प्रोनाउंसिएशन आप कह रहे थे, कश्मीरी का भी, संस्कृत का भी, जो हम लीला रब्दा पढ़ते हैं उसमें एक सेंटेंस आता है, आदि ख्यांतम अक्षर मुक्त, तो से ख तक जितने भी अक्षर हैं उसमें देवी का ही प्रभाव। तो मुझे लगता है शारदा देवी जो है वो हर एक अक्षर से है, उसमें उसकी जो शक्ति है वो उसमें होती है। तो इस कंसेप्ट को लेके हम आगे चलें।
और मुझे उम्मीद है कि next step will be not easier but much faster, because it took almost 7-8 years for you to move to this level. So I'm very happy. Congratulations, सबको साधुवाद, और उम्मीद करता हूँ कि ये कार्य आगे बढ़ता रहेगा. जो भी हमसे संभव होगा मैं करने के लिए कोशिश करूँगा. Thank you very much, the team, Sharda and Rakesh. Thank you, Mara. Dhanyavad for your kind words. Kind words. I think you really pointed out. Yes, it is a beginning, but it is never an end. आपने mention किया स्वामी जी का. स्वामी जी के हम in fact in our teachings also, Swami ji has an audio on each and every alphabets, how to basically pronounce them, and that is also in Sharda Lipi itself. And you mentioned about a theory of alphabets. That is correct. Matrika. हमारे टीम ने we also published each and every shloka which is correspondent to each and every alphabet. We had published it almost 7 months back. वो भी हमने publish किया. Thanks so much, Mara, for your inspirational words, and definitely your blessings and your guidance will take us forward. Over to Veronica ji. Yes, thank you, Rakesh ji, and thank you so much, Professor Sopory ji, for such kind words and encouraging us. And very beautifully, as you have explained the theory of alphabets, that really is what is important in Sharda Lipi, is it has very close connection to Kashmir Shaivism as well. So now we will present a little about the journey, how we started making this book, where the idea came from. So I request Sunil ji also to share the screen so that we can begin with the presentation. Yes, so first of all, I would like to thank the entire team who have helped us in completing this book, the entire team that we flashed in the beginning, and extremely thankful to Shri Anupam Kheji for providing the foreword to the book. This primer ready today. As I mentioned in the beginning that this book is first of its kind, well, the reason is there have been many primers for Kashmiri language in Devanagari Lipi, but none in Sharda Lipi that focused on the special vowels or the notations that are extremely important to read and write Kashmiri language. As already Rakesh ji mentioned before, like in Devanagari Lipi we have the sound of so se anar, a se am, correct? Now in Kashmiri language we have some sounds that for example uns. So you cannot write uns without having that half sound in the lipi to make that sound. So if you write n and z, bindu and z, it will become uns. So to get that sound of uns, you need the half sound of So that is why these notations are extremely important to write, read, and actually taught Kashmiri Lipi, Kashmiri language and Sharda Lipi, to write it in Sharda Lipi. And see, all the notations and the special vowels that we have used in the primer, they had never been standardized before. So these sounds, they have already been a lot of scholars like M.K. Raina ji, from where we have actually learned these special vowels. So there are many scholars who have worked on these notations, but there was no standardization. Basically, every author would use these notations in their own way. So we did not want the same fate for Sharda Lipi as well. We wanted that standardization for Sharda Lipi, that these vowels and these notations should be standardized for at least Sharda Lipi. Unlike what happened to Devanagari Lipi, these are still not standardized in Devanagari Lipi. And the other utmost important thing that we feel, that we actually thought before getting this primer into work, was for any culture to survive, we need its language, art, lipi, drama,
we need to keep them alive. And that is why this was the most awaited primer for all those who wish to read and write Kashmiri in its original script, that is Sharda Lipi. And as already mentioned by Rakesh ji, it took us almost, I would say, 1.5 years to finally come up with this primer. The basic challenge, as I already mentioned, was these special notations which were not standardized in Devanagari Lipi, and to get them standardized for Sharda Lipi. So we have spoken to many scholars like Shri S.S. Toshkhani ji, Shri A.K. Khazanchi ji, and then finally we came up with the conclusion to have these notations and standardize them for Sharda Lipi. And after having, I think, hours of discussion, we used to have these discussions every fortnight, every week, and we came up with this, the primer that you have in front of you today. And then the journey began for this primer, and with everyone's contribution, each one of us that I mentioned, this has been finally we have been finally been able to launch this today. And now I hand it over to Sunil ji, Sunil Manuri ji, who has designed the book, and he's here to take us through the other details. Sunil ji. नमस्कार मारा, नमस्कार टू एवरीवन। जैसे इस बुक को ये दिखाना चाहता हूँ, ये बुक है हमारी, तो यही इसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर में पेज वाइज। इसमें हमको बनाने में जो बेसिक जो डिफ़िकल्टीज जो नज़र आई, राकेश जी और वेरोनिका जी ने जैसे बताया कि जो डायक्रिटिकल मार्किंग्स हैं कश्मीरी की, वो कॉन्फ्लिक्टिंग थी। उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ, उसके बारे में संजीवनी शारदा से हमने बात करी, फिर वहाँ पे संजय जी हैं, फिर M.K. रैना साहब हैं, उन्होंने फिर एक रास्ता दिखाया हमको कि इसको करना चाहिए। एक्चुअली हम लोग उसका जो फॉन्ट है, वी हैड ऑलरेडी मेड द फॉन्ट, and we, after making the font, we proceeded with the app. Then after the discussions happened, so then we came to that there are something is missing, like the Kashmiri dialect की जो ये हैं markings हैं वो missing है, तो फिर हमको redo करना पड़ा font को, where we included whatever was discussed. So coming back to the book, सबसे जो इसमें जो अपने लेवल पे हमको जो डिजाइनिंग के लेवल पे जो इसमें दिक्कतें आई वो वाज द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आपको पता ही होगा कि कश्मीर की जो डिफरेंट एरियाज हैं उनका डायलेक्ट डिफरेंट है, काफ़ी सच अनंतनाग एरिया में डिफरेंट डायलेक्ट में बात करते हैं, और आप श्रीनगर की तरफ में आएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट डायलेक्ट हो जाता है, फिर सोपोर की तरफ जाएंगे तो थोड़ा डिफरेंट डायलेक्ट हो जाएगा, जैसे पुलवामा की तरफ का डिफरेंट है। तो उसको एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड्स को सेट करना वो अपने में एक चैलेंज था, जो कि संजय पंडिता जी के साथ में और M.K. रैना जी के साथ में और संजीवनी के साथ में वेरोनिका जी, राकेश जी, सब ने मिल के उसको हम लोग सॉल्व किए, और फाइनली हम एक कुछ वर्ड्स पे पहुँचे जिसमें कि कम से कम कन्फ्यूजन हो और प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो, वो एक चैलेंज था। दूसरा एक और चैलेंज था कि सिंगुलर प्लूरल का जो एक चीज सिंगल KL एंड KL, दैट वाज अनदर चैलेंज टू सेलेक्ट बी न्यूट्रल एंड सेलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। हम एक सिंगुलर की बात कर रहे हैं या प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। सो दिस इज फॉरवर्ड दैट वाज रिटन बाय जो अनुपम जी ने हमको भेजा है, was kind enough to write this for us, so that हमने डाला इसके फॉरवर्ड में, where he is Kashmiri being his mother tongue, he is thanking everyone, and in his Kashmiri his files movie is also given emphasis to the script of Sharda का भी mentioned उसमें, so this is the foreword of it. So coming back to the actual book, so this is how हमने एक शारदा का जो वर्ड लेटर्स हैं उनका एक डेडिकेटेड एक पेज दिया है, देन वी हैव गिवन दी आई का पेज एक दिया है, तो ख का पेज दिया है, देन वी कम टू द बुक, दिस इज हाउ इट लुक्स। दूसरा एक चीज़ इसमें जो लेआउट में इशू आ रहा था कि इसमें लेआउट किस तरीके से की जाए, क्योंकि हर एक काफ़ी सारे पेज आप इस बुक में काफ़ी सारे लेआउट देखेंगे, क्योंकि एक वर्ड की डबल प्रोनाउंसिएशन है, उनकी मात्राओं का यूज़ है और इनकी एज अ फुल फॉर्म में यूज़ है, अ का भी मात्रा के फॉर्म में यूज़ है और नॉट मात्रा के फॉर्म में भी यूज़ है। तो ये
ये तो मात्राएं हो गई हैं, पहले हमने मात्राएं कवर की हैं, उसमें विद पिक्टोरियल, जैसे ये केल, दिस इज प्लूरल, आप देख सकते हैं इसको। सारे हमने ऐसे वर्ड्स प्रेफर किए हैं, हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हों, डेफिनेटली कुछ ना कुछ निकलेंगी ज़रूर, मगर हमने अवॉइड ट्राई किया है कि सबका सजेशन लेकर के वी रिड्यूस ऑन द नंबर ऑफ मिस्टेक्स वी मेक, मे बी द नेक्स्ट एडिशन विल इनकॉर्पोरेट मिस्टेक्स, we'll do the corrections and all. This is a 50-page book. ये हमने पॉपुलर वेजिटेबल्स, यहाँ पे सबका हो गया है, बहुत तक की मात्रा है, और ये हमने कलर्स इसमें दिए हैं, then we have given vegetables, then we have given numbers, then we have given family, and these are two other books we have already done, the primers, अक्षर ज्ञान की किताबें हैं। जैसे सोपोरी जी ने कहा कि भाषा समझने के लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो मदर टंग है वो घर पे ही पढ़ी जाती है, so that is the natural process, but since we have disconnected from that listening part of the language, of the Kashmiri language, वहाँ पे हम लोग कमज़ोर पड़ गए हैं because of our dispersion, so our natural process of learning is spoiled, so maybe this book comes as the कुछ एक मदद मिले इससे, that we can get it right with our children, that they can pronounce and read Kashmiri. Also, I'd like to thank all the माँ शारदा का ऐसे दया रही कि जो हमको जो प्रिंटर थे, और प्लस जो सोपोरी साहब को जो किताब भी मिली वो भी संभव हम बेच पाए उनको, ये सबका ही माँ शारदा की दया है। प्रिंटर ने भी बड़ा अच्छा काम किया है, तो उन्होंने भी कभी इस तरीके की बुक छापी नहीं थी, इस तरीके की बुक रीजनल लैंग्वेज में ही छपती हैं, और उन्होंने प्रैक्टिकली छपा नहीं था, तो इट कम आउट वेरी वेल, ग्रेस ऑफ गॉड, आई थिंक टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम दैट। रैना जी, प्लीज टेक फॉरवर्ड फ्रॉम दैट। Yes, thank you, Sunil ji. You can stop the screen share. Is the screen sharing stopped? Oh, yes. It's yeah. Okay. Yes. Now it gives me an immense pleasure to invite our next guest, Ms.Bhasha Sumbli ji, our very own Sharda Pandit from Kashmir Files. Born in Srinagar, she learnt the folk theatre Band Perthur under legendary Shri Motilal Kemuji, a graduate from prestigious National School of Drama, New Delhi. She has won several prestigious awards and critical acclaim for her performances in international theatre festivals in India and abroad as well. Now here is Bhasha Sumbli ji to present her views about the book. Bhasha. नमस्कार नमस्कार Namaskar. सारनी मारा गुलगंडित नमस्कार सरी छ में जेठी बड़ विभूति यमन मंज तोय में आमंत्रित करूं तो मैं खतर से वारिया बड़कात प्रोफेसर सोपोरी जी के सामने चमनलाल रैना जी, राकेश जी जो कि मेरे गुरु हैं, जिनसे मैंने सीखा है, वेरोनिका जी भी मेरी गुरु हैं, क्योंकि मुझे स्पान पर्सनली एम कोर्स विद स्टूडेंट रोज मज पत्यों में सुत्रावन मंज वेति के मैं प्रमोशनल एक्टिविटीज वारिया बिजी सस्पति मनसी फिल्म रिगार्डिंग तो सुकर रिज्यूम मगर at the onset, thank you so much for inviting me. It's such a huge honor and poezi bulavna itpet tohimans bag yuhun to be bolun तो toy chume unmud बोलने खतर तो इसलिए बकार सिर्फ ये तो एक पर्सनल मैं आपको एग्जांपल से शुरू करूंगी बोलना। ये वीडियो ऑन है? हाँ जी वेरोनिका जी, कैन यू पिन हर प्लीज? तो बकार शुरुआत एमपेट की येमदो में खानदा रोज ऑन द डे ऑफ माय वेडिंग मुझे पापा ने जो गिफ्ट दिया था वो था श्री तंत्रालोक, आचार्य अभिनव गुप्त जी का जो श्री तंत्रालोक है। इट इज इन 8 वॉल्यूम्स एंड ऑल्सो भरत मुनिज नाट्य शास्त्र, इट इज इन 4 वॉल्यूम्स। तो वो मेरा वेडिंग गिफ्ट था, वो हमारी संस्कृति है। दिस इज व्हाट माय फादर गिफ्टेड मी एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट वंडरफुल, मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट that any bride can have or any daughter could have.
तो वाइनियल में लोग ना पारोन, जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया तो वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द वेरी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ ऑल द 8 वॉल्यूम्स, it was all about the divine symbols and the divine मातृका. तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया, सारा सिर के ऊपर से गया, तो मैंने वो किताब बंद कर दी. और फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि द सीक्रेट सुप्रीम है बाय आचार्य लक्ष्मण जू, स्वामी लक्ष्मण जू की जो द सीक्रेट सुप्रीम है, दिस विल गिव यू अ बेसिक इंट्रोडक्शन. So that really helped me because that gave me an introduction into the 36 elements of Kashmir Shaivism and जो कैसे और also the matrikas. Now having read that also, उसके बाद मुझे कोर शारदा के बारे में पता चला and I enrolled in the team and राकेश जी ने जब पढ़ाया तो वो रेफरेंसेस भी देते थे कि जो हम अभी क वर्ग सीख रहे हैं या च वर्ग सीख रहे हैं, ये कैसे कौन से एलिमेंट्स है ऑफ द 36 एलिमेंट्स ऑफ कश्मीर शैविज्म. सो दैट एक्चुअली एम्पावर्ड मी एंड रिकनेक्टेड मी विद ऑल दोज जो मेरे लॉस्ट कनेक्शंस थे, एंड इट empowered me to now understand Kashmir Shaivism even better. तो मुझे पता नहीं था कि सिर्फ एक शारदा लिपि सीखने का मुझे इतना फायदा मिलेगा कि now I can actually dare to open Shri Tantralok once again. So I'm so thankful, and because I didn't know this is the language, this is the power of the script, of the Sharda script as well as the language जो हमारी है. Also having said that, तो ये जो अभी हमारा प्राइमर है, आज जो हमारा प्राइमर रिलीज हुआ है, ये एज राकेश जी वेरी वेल सेड कि सिर्फ एक प्राइमर, मात्र एक प्राइमर नहीं है, ये हमारी आज बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा पहल है. ये हमारी, मुझे लगता है हमारी सांस्कृतिक जो पुनर्जागरण है, ये उसका एक बहुत सशक्त कदम है, पहला कदम है. और दिस विल डेफिनेटली गो अ लॉन्ग वे इन आवर रिक्लेमेशन एंड रिवाइवल ऑफ आवर लैंग्वेज. जैसे कि अगर हम इजराइल को देखें और जूस की बात करें तो हाउ दे रिवाइव्ड हिब्रू फ्रॉम द clutches of extinction and they brought it back and now it is a powerful language of world literature. यहाँ तक कि एमोस ओज से लेके यहूदा अमीखाई को हम जानते हैं because as great literatures, and they have contributed immensely to world literature in this language only, Hebrew, जो कि एक समय पे extinct होने जा रही थी. तो ये उन्हीं के सारे प्रयास थे जिससे कि उन्होंने अपनी भाषा बचाई, और भाषा को इतनी एनरिच्ड भाषा है. तो हमारी तो ऑलरेडी बहुत एनरिच्ड भाषा है, और उसकी जो लिपि है वो इतनी साइंटिफिक है कि आज जो ये प्राइमर रिलीज हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिवाइवल एंड ऑल्सो द रिवर्सल ऑफ द कल्चरल जेनोसाइड दैट वी आर फेसिंग. जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि और अगर आपने, खैर कश्मीर फाइल्स इज वन थिंग, बट उसके पहले अगर आपने यूट्यूब पे मेरे कुछ छोटे छोटे फिल्म्स देखे होंगे, उर्दू क्रिएशंस के नाम से, आई वर्कड विद चिल्ड्रन स्पेशली टू रिवाइव द लैंग्वेज ओनली. तो मेरा फोकस एज अ कल्चरल एक्टिविस्ट यही रहता है कि बिकॉज यू नो दिस कॉन्शियसनेस दैट वी आर इन एग्जाइल शुड बी देयर 24/7 इन अस. क्योंकि जो संस्कृति होती है वो, पहली बात तो वो पैदा होती है, पनपती है और नरिश होती है उस लैंड में जहां की वो है. अब वो लैंड तो हमारे पास नहीं है, वी आर इन एग्जाइल, फोर्स्ड एग्जाइल. सो व्हाट वी हैव इज आवर the memory of the Sanskriti. We don't have the land which will nourish the Sanskriti, but we have the memory, and our entire struggle is to retain the memory of that Sanskriti. तो वो कैसे होगा? वो भाषा से होगा. भाषा होगी क्योंकि मातृभाषा जो है वो मातृभूमि का ही एक स्वरूप है. आपके पास अभी मातृभूमि नहीं है, हम सब निर्वासन में है, निष्कासन में है, लेकिन अगर हमारे पास मातृभाषा है, अगर इस कशिर पे रोजो का करान तो एस बाइस की कशिर, वो कश्मीर जो हमारा जो अस्तित्व है, like as I always say, these are two aspects of the struggle that we have. One is the existential struggle, जान बचाने का जो immediate threat to our survival था in the 90s when we were forced to come out of Kashmir. तो एक तो हमारा था जो अस्तित्वगत स्ट्रगल जिसको हम बोलते हैं, अस्तित्व की लड़ाई, जान बचाने की लड़ाई. दूसरा था उसकी आत्मा, उस स्ट्रगल की भी जो आत्मा है वो है अस्मितागत संघर्ष, यानी अपनी आइडेंटिटी बचाने की जो लड़ाई है. नाउ आइडेंटिटी इज अगेन योर संस्कृति. तो इस वक्त जैसे कि हम विश्व के अलग अलग जगहों पे बिखरे हुए हैं, हमारे पास
ये राजनीतिक एक स्ट्रगल तो चल ही रही है टू रिक्लेम आवर होमलैंड, और उसके लिए जो कुछ भी हमारी भू राजनीतिक एस्पिरेशंस हैं या चेतना है, उसको बनाने के लिए हमारे राजनीतिक जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, they are constantly active since the last 3 decades. But also on the cultural front, what our duty is to preserve our and promote our language, our culture, and language is the main उसमें जो एस्पेक्ट है, और वही एक्सटिंक्ट होता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो और लैंग्वेज इसलिए भी एक्सटिंक्ट होता जा रहा है क्योंकि जैसे 16th सेंचुरी तक तो शारदा में सब कुछ हो रहा था, लेकिन उसके बाद जैनुल आबदीन के टाइम पे जब फारसी रिप्लेस्ड शारदा, सो दैट्स आई थिंक वन ऑफ द वेरी सशक्त एक प्रहार था हमारे कल्चर पे, और वहां से मुझे लगता है कल्चरल जेनोसाइड बहुत एक्टिवली शुरू हुआ, बिकॉज वंस आपकी लिपि गई तो आपकी भाषा गई, भाषा गई तो सारी संस्कृति गई, संस्कृति गई और आपकी सारा योर होल्ड ऑन योर लैंड इज वीकेंड। सो जब फारसी ने रिप्लेस किया शारदा को, तो वी मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू द प्रीस्टली क्लास जिन्होंने जातक बनाए, जिसका भी मेंशन हुआ था, जिन्होंने जातक कश्मीरी में बनाए, और ऑल्सो द बिजनेस क्लास जिन्होंने बही खाते जो थे वो कश्मीरी में लिखे, शारदा में लिखे। स्पेशली ऑल्सो some of the epithets on the graves in Kashmir still are found in, one is in Nastalik and other is in Sharda. So these were desperate attempts to preserve Sharda by these people many centuries ago, जिनको हमें याद रखना चाहिए और उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। क्योंकि अभी भी मेरे घर में मेरे पास नाना जी का, नानी का, दादा दादी, पापा पापा, इन सब का जो जातुक है वो अभी भी शारदा में है, और उससे आई गॉट अ लॉट ऑफ हेल्प टू अगेन अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव लॉस्ट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे ये भी बोलना है कि यहाँ पे आज हम एक बहुत ही बड़ा शुभ अवसर है और बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। आई वुड ऑल्सो से कि ये दिस इनिशिएटिव ऑफ मेकिंग दिस प्राइमर विल डेफिनेटली गो डाउन अ लॉन्ग वे, एंड हिस्ट्री विल बी वेरी काइंड, बहुत इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा आज का दिन, ये जो सारी मेहनत है इस प्राइमर को बनाने की। मगर हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि हमारा जो समुदाय है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माय समुदाय, माय पीपल, दैट 1990 के एक्सोडस के इमीडिएटली बाद, कुछ ही साल के बाद, 1993 में जब पहली वर्ल्ड कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में 1993 में, जस्ट 3 years आफ्टर इट, तो वहां पे 2 बातें हुई थी शारदा को रिस्टोर करने की। एक तो एक 2 feet into 3 feet का बड़ा चार्ट, जो कि वर्णमाला, स्वर, अक्षर, व्यंजन जो शारदा के वो रिलीज हुए थे, एंड ऑल्सो दैट वाज अ पिक्टोरियल चार्ट। और दूसरी बात ये भी हुई थी कि शारदा सम्मान नाम से द हाईएस्ट अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड, एंड इट वाज conferred upon great dignitaries like अनुपम खेर जी, जगमोहन जी, पंडित भजन सोपोरी जी, जिनका मैं अभी नाम ले रही हूँ, स्वर्गीय पंडित भजन सोपोरी जी की पुण्य स्मृति को मैं प्रणाम करती हूँ। आज इस वक्त उनकी श्रद्धांजलि सभा भी चल रही है दिल्ली में, IIC में। पंडित भजन सोपोरी को मैं इसलिए भी याद करूँ क्योंकि उन्होंने कंपोज की थी एक शारदा स्तुति, जो की थी नमामि त्वाम शारदा देवी काश्मीरपुर वासिनीम पीत वस्त्र धारिणीम शततंत्री वीणा वादिनीम। शततंत्री वीणा इज द 100 stringed instrument which is the संतूर, जिसके वो लेजेंड थे। तो उनकी स्मृति को प्रणाम करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, आई विल जस्ट ब्रीफली कंक्लूड व्हाट आई वांटेड टू से, कि हमारा जो आज का जो ये दिन है, इट इज अ कल्चरल रिवाइवल और जो रिवर्सल ऑफ कल्चरल जेनोसाइड का जो एक बहुत ही बड़ा एक इनिशिएटिव का दिन है, एंड वी मस्ट सेलिब्रेट इट। एंड जैसे जो हमारी कश्मीरी भाषा की जो हमने जो टेक्निकल डिफिकल्टीज की बात की, एक बार मुझे जैसे अल लिखना था, फॉर एग्जाम्पल देवनागरी में मैंने लिखा अल, तो मैं अ और ल ही लिखूंगी। नाउ वही बात है कि वो अल को हम अल समझें या अल समझें, क्योंकि वी हैव सच अ रिच लैंग्वेज एंड इतना डाइवर्सिटी और इतने वेरिएशंस हैं और इतनी इसकी ब्यूटी है कि वो उस सबको कंटेन जो कर पाती है, वो वही स्पेशलाइज्ड लिपि है जो कि कश्मीरी की शारदा लिपि है। सो दिस इज नाउ समथिंग दैट एवरीबडी हैज इन देयर हाउस, एंड वो बता के बोल सकते हैं कि भाई ये है और इसको पढ़ो।
है ना, मतलब shouldn't sit like Koshur put kaf karin Koshur, वो जो spoken tradition जो मतलब मैं ची हेचमुत Koshur कैस में नाइनस करान Koshur कैस तेमस उसने हिंदी तका, अभी वो वाला चीज चला गया है. Our parents can speak fluent Hindi, so they are comfortable speaking Hindi. So tim chine tim painstaking efforts hevan. मगर यूजन वाइन सरी मेहनत छु या प्राइमरस में जामस करने वाइन छु तो सिवाय ये करुन की तो छु ये प्राइमर दियोन अथस के शुरियन बर्सन बाडियन इवन बाडियन तो कच तगन कोशुर मेरा खुद का कोशुर सिख कोशुर होता था एक टाइम पे पात आई गॉट वेरी कॉन्शियस ऑफ इट ये आसानस में पट पात गए इसको वारे कॉन्शियस तो इच में विन में नदपान की सशी मांस गसन सीरुक कोशुर पच्छी से मांस गसन सुंबलुक कोशुर पच्छी से गसन अनंत नहीं कोशुर बट दैट्स ओके कम से कम कोशुर यो टाइम कोशुर तगान में तो टाइम आई फील कि ओके आई एम कनेक्टेड विद माय लैंड बिकॉज मैंने जैसे कहा मातृभूमि और मातृभाषा का एक बहुत बहुत कनेक्शन है. अगर मातृभूमि हमारे पास इस वक्त नहीं है, कम से कम हम मातृभाषा को तो बचाएं. अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ इवन गोइंग बैक. जब आप कल को वापस जाएंगे कश्मीर, जो कि एक दिन जरूर होगा, द स्ट्रगल इज लॉन्ग बट इट विल हैपन. बट व्हेन यू विल गो बैक टू व्हाट विल यू रिक्लेम, आपको जगहों के नाम नहीं पता होंगे, आपको कश्मीरी में उन शब्दों के मतलब शब्द नहीं पता होंगे, उन चीजों के, उन मौसमों के या उन हमारी कल्चरल आइडेंटिटी की चीजों के. सो इसलिए ऑलवेज स्टे प्रिपेयर्ड एंड ऑलवेज बी इन दिस एक्साइल कॉन्शियसनेस दैट यू नो वी हैव टू प्रिजर्व what being Kashmiri means. What being Kashmiri means, and I will conclude with poet Bilhan's statement, जब वो अपनी जो उनकी epic है, which is called I think I forgot. No, हाँ, विक्रमांग देव चरित. विक्रमांग देव चरित में वो कहते हैं कि मैं उस शारदा देश से आता हूँ. कश्मीर का नाम शारदा देश है बिकॉज नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी, हमारी माँ शारदा कश्मीर की ही वासिनी है. तो he says I come from that शारदा देश in विक्रमांग देव चरित where the women speak fluently 3 languages. One is Sanskrit, other is Prakrit, and the last is their Janma Bhasha. The Janma Bhasha is Kashmiri obviously. और तो ये हमारी लैंड की जो रिच लेगेसी है, ये हमारे पोएट्स की लेगेसी है, इसको हमें बचाना है. एंड वो माँ शारदा की कृपा की वजह से हम विशारद कहलाते हैं. विशारद then becomes Pandit because Visharad is Pandit. That's why we are Kashmiri Pandits. So to live up to our names, we have to really preserve our language. And this is a huge day. It's a phenomenal success. And I really congratulate you. And I'm really proud to be associated with Ko Sharda. Thank you, Jai Ma Sharda. Thank you. Thank you so much, Bhasha ji. It was lovely listening to you. Such a beautiful presentation and such beautiful insights that you have given today. And also you have touched rightly upon how important it is to revive our language, our lipi, to keep our culture alive. Thank you so much, Bhasha ji, once again. Now I would introduce our next speaker. Yeah, Dr. Chamalal ji is here. Yes, he's here. Let's introduce Dr. Chamalal Raina ji. He's born in Kashmir and was initiated into the Sharda Beej Mantra by Swami Madhavanand Saraswati at his Gauri Shankar Ashram in 1945. He studied Kashmir Shaivism from Swami Lakshman Ju Maharaj and shakt tradition from Pandit Jagannath Sibbu ji. He did his research methodology course on Kashmir Shaivism and Laleshwari. And was enrolled as a PhD scholar at the University of Kashmir. Extremely happy to invite you here, to have you here and present your views on the book. Dr. Raina ji. Namaskar. Namaskar. Hello. Namaskar Mara, namaskar. Namaskar. सर्वप्रथम गणित सारे अभिनंदन करान बे तुंद शारदा टीम्स के तमो दित मे अवसर प्रदान को तमो कि बत बोल ये जोर लफ्ज यम माता शारदा शारदा अम ब्रोन अभिनंदन करान प्रोफेसर पद्मश्री सुधीर कुमार सोपोरी जी, वाइस चांसलर रोजमत
बड़ साइंटिस्ट सटा साइंटिस्ट सब्जेक्ट माहिर इंटरनेशनली renowned तम पत स्वामी लक्ष्मण जो सटा वेट तिमो निश ज्ञान प्राप्त कर्मुत कत कत करान वो तिमो तुम मर साइंटिस्ट ज्ञान योत तुम विज्ञान विज्ञान तो बे गो ज्ञान इस ज्ञान यह पूरक विज्ञान तो तुंद यह लाइफ पैटर्न यह applied Kashmir Shaivism or applied Kashmir. Bechu's ba Bhasha ji hun timan आशीर्वाद दिवान Dr. Dicky che Pathun che pannis time man ch datchit काम करान त रोंडकुन च कल्चर बड़ा बे युजन मेवन बड़ टोट मोइन तो लड़के मानो इस लड़के हो छुस बमिस मानन राकेश जी सत बे यस वेरोनिका जी तिमन बे ज्योति जी बे कुराज दर्शन में सुनील जी यम जन यमो जन अख समूह बनो अख संदर्भ बनो यह बनो अख कम्पोश यह जन प्रफुल्लित गो कित पे गो प्रफुल्लित यह जन स्रोत यमुक सोर्स कश्मीर सान सती सरच जननी जन्मभूमि च लिपि त्रिशोपी जननी ति जन्मभूमि ति लिपि ति चिंतन पन आइडेंटिटी बनान बहुत कोशुर बोलान बहुत कोशुर सोचान तूत मे सपन दिवान मंज यह अख लगाव यह जन अंग्रेजी पे नॉस्टैल्जिक यह सोचान मगर अगर बह सोचान यह जन कत फिर बह अंग्रेजी पे फिर बह उर्दू पे फिर बह हिंदी पे फिर बह बाकी जबान अगर बह जानान तिमन मन फिक्र मगर यस जन मान नान पर नान माज सत पीर बूझम सो जबान अगर बह तथ अंदर कर बह ज्यादा अंडरस्टैंड कर बहुत लैंग्वेज टीचर बुम्बर मे भाषा पर्न जबान पर्न अत अंदर वुचान यस जन अत अंदर ज्ञान तो विज्ञान कशर जबान मज तथ अंदर अमुक संपूर्णता सो आवृत सो संवृत गम सो परिपूरित गम कमन मज दुनियन ये वक्त जन वेद परान वेदुक अध्ययन करान अमे ब्रोट वेद अध्ययन करने ब्रोट वुन यह साउंड स्ट्रक्चर द्राय यह कत द्राय यह महेश्वर सूत्र यथ वन टाबर बजो अत बनो पे अख आवाज यथ आवाज मज गोडनुक प्रणव सो प्रणव ये वक्त जन यांत्र मज करान सो प्रणव ओम शारदा ओम क्योंकि तुम बोजना अत अंदर यह बेसिकली यह सान ऋषि या मे गरस मत यह बनाव अत आकार दिवान प्रतिमायन जरूर यह सान खतर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वेदास एंड द आगम शास्त्रास ऑफ Kashmir. This is only possible when we can understand the genesis of these lines with regard to the petals, with regard to the dot. अमे खतर क्या अमे खतर तरीक सह तरीक सह दुनिया यथ पे जन सान ऋषि लिखुत दुनिया गो महेश्वर सूत्र तम पत आव दुनिया बे फखर पज जन सह नफ कोट समावेश नादी फंता इतिलपिरसती नफ कोट समावेश नॉट द फर्स्ट मज कोट समावेश अमि परमुटेशन तो कॉम्बिनेशन यम कसा बड़न यम गसन सफारस मज युजन समित स्वरूप से मज अमि एनालिसिस सब पत क्या सुन नादी फंता न आदि न आदि एक्स्ट्रा न एक्स्ट्रा न साउंड नेजल साउंड यह प्राणायाम सो
Ashe rot nas, ashe kor shaban, ashe kor sha, atandar yuzan atuna na adi phanta perspective yuzan sabdan chu amuk samavesh yuzan mon body structure chu. Sorry, ya yazan cytology chu medical sciences mazana san physiology chu ikit pocheria repair gasan atandar kit poch for energy yawan. Ye energy chu basically some structure aspect. Tawai chu sanyo acharya gunmat yuzan Sopory saban won Adi Kshantam Akshar Murtabil Santim Bhute Bhute Bhuta Kadamba Pasvitrim Shabada Brahmananda Mayitam Patyam Gaurim Ambam Ambro Akshimamide Adi Kshantam extra de yazan yusor yazan vowel bananche Pata Kashur Putum Shabu Yuzan Chu At under ye garbage Yuzan Sori Brahman Yuzan Sari Donichi, Iman Donian Sumo Yuzanchu, is a story to Adi Shanta Yikatigo. Ye one Acharya Adi Shankara Yikati. You want them Tati yet Zan, ye what the Zan Temis ya spiritual graduation at physical language was one of ya the servant Yopadi I Ati Sharda Pistis ones. Ye what the Pata time Temis conferred degree. The Jema is also Sarvagni, sorry, Tagan, but you're a Kamane. I was Gavri, Mamma, Amberho, Akshima, Mide, He Mata, He Sharda, Gavri, Tisha Gavri, Gavarna, Gav Supreme. Gauri Shabud should be hearing a garbasuit. Gauri Ambanga, you see motherhood, concept of Shakti tradition. Amburho Akshim, the Chak Amburhoga Pomposh Manzichi, Netrich, your Pomposh yoga. Pechuna Tandarkini, Yimzan Am Kam Cham Tam Tam Pam Yam Sham, Yim Shabutchi, Yim Chet Pomposhus months, Shuran Watran months, the Bay Otan Watran months, Yim Chatin the Yim Garbitam. I mean, one's needed. Yem what is an Atibanil. तो ये बने वक्त पंपोषक ये बने मूलाधार पेट साता लगाते सनिस सहस्रार स्थानित कब सहस्र मतलब वो सिर्फ सहस्र योत अनुक मान्य को सहस्र चलाना संस्कृत में सास मगर अनुक शास्त्र में लिखित है अनंत ये जो अनंत स्थान है जो से एनर्जी चाहिए आसान ये स्थान विश्व ये जन से आगम कृषि है ये मुख स्रोत है क्या अतंदर मेलान ऐसे शिव सूत्र मेलान ये स्रोत ऐसे रुद्रयामल तंत्र लेखन मेलान प्रतिविज्ञा शास्त्र मेलान स्पंद शास्त्र मेलान तम मज तम शब्द यम जन तम सूत्र आत्मसात कर बेसिक कॉन्सेप्ट इज टू रियलाइज द वर्ड इट्स मीनिंग यह कथ वन यह कथ वन गए कालिदासन वाकर्थो संप्रक्तो वाकर्थो प्रतिपदे जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर वाक्त अर्थ अनित यम इथ पे मिलित इथ पे जन शिव तो शक्ति यम वक्त यह कॉन्सेप्ट दुत यह तम पत कल पत आव वन क्या शिव शक्ति एक रूपिणे नमा शिव शक्ति एक रूपनिस कव शब्द तो अर्थ अको यथ पे जन बहुत कत कर तुम वुचान कव अत आत्मसात गि कत पे वोत टेक्नोलॉजी वनकस अजमेरस मं वनकस बाकी जान तरफातन मन वारियान जुतन मन वुचान मगर साउंड वाइब्रेशन इट टेक्स नो टाइम अतंदर कहीं समय लगान यह ट्रांसफर गसान तौर अंदर ट्रांजिट अतंदर कोशिश सपदे सतजस तानत जिंद नमो तुम 1945 अप्रैल रेतस मे ये वक्त गोच लटि बस स्कूल में गन तताजन मोनस बह तमिस निकाय सह सारस्वत बीज मंत्र दिखत स्वामी माधवानी तम वक्त 1945 मज सेठे बड़ बार स्कॉलर कश्मीर शेफ दर्शन एस्पेशली विथ रेफरेंस टू द शक्ति ट्रेडिशन ऑफ कश्मीर तमो वोन मे तो मेस मोदस वोनमुत गथि तुज ग शंकराचार्य पे तो बेन मश आई मशक तहत नीस गई तौर तत रोक पे रोट तमो मे यंग रोट अम पे लेखनस बह वो क्या लेखन कत पे ट्रेडिशन ट्रेडिशन खतर वन
Vuma vum, soyam so, tevis te, sedav se, damar dam. Yuthu yibanam om swastistam. Yuhai katchin lichmas, om swastistam, yichi ved vehiti lichmas, panya yilmut Quranas. Gav yushu mula mantra sharda samijana khatruchu om swastistam. Yushu a pattern. Yatandar Shakti traditions months. Jos asi dizmus, sanyo buzargav dizmus, tuhundev myanyo sarv chu dizmus, timo dutas tantra, agam, agam go nigam, agam nigam chu panvanim purakat purnataya mans, yuzuni nigam concept chu, yuzun pesisi tatandar agam chu, amuk mul yukor so relavakshirish. Timbano asi ak prepun, sharda put. Pata lek, pata awan Devanagaris lek. Magar time dut you sorry, dopin say Koshur mind. You know, Hagen was a foresight man. Time that he Hagen you sorry Shastra put it. They taken put it, time could codify it. Gav sign Puza Padati months are some partial of the, not the whole, but the part of the Vedas are being recited here or being offered as oblations in the time of the Sadda. Time pat yuzan yut timo yut sorry yikarit yene ki yuzan spiritual encyclopedia tamuk agar zan es taro quintessence ya yuzan tamak essential part ya essentialism zan yen wat zan manthan karav dost pata bani thani yot pati bani pata gavo yot patu yos barbish khaneran ch subakut temis yo sorry likit katnder o shadas Tanpat Achada months of Parnam. Kumpi Shastra I Parnam Yamav, especially I Kashmiri months Shaiv Siddhant. Yatan Tarzan Tantra Chai Parnam, Sapand Shastra Chai Parnam, Pratipigna Trashinka Parnam, the Yemuk Prichar, the Prasar was Pana Amut, Shuvasurupi, Swami Trikacharya ji Maharaj. Yimavazan, I give one, I mix necessity show. You cheese, you go forward. What a tiny person of Kashmir Shai with my Shavism. What a tiny person, not Turkishastri, US banana, Turkishas and Westana. They as no Kunikitabu now, if you want Shri Varevan, Masan Shri Ishwar Prativigna, Shri Sutra, his own culture traditionalist. Magar time Patigam, Timo Tho Athandarpat, Maharajas Pratap Singh Vatan, Atta Nav, King Chintan Skapat Nav, Yuzan Imam Korea Kashmir Shavdar, Panya Pata Angris. The Magal Pinky Insan Stim, Iman Nizan Yim Kitab Shardas Manzois, Alpichubai, Hanjay and Mazmunkanas, Amaki Karana Yuzana, the internet is Pachamit, Yuzan Daman, Mankupur, the Atom, Korea, Timo Kari Collecti, the Chat and the Lake. Magal basically you said Bhasha. Ye Bhasha Pasich, ye Bhasha Sanskrit. Ye partially Vedic and partial more and more it is of agamic language. This agam is not a language hasan. The 30 agamic language means Shia Ahmad Karnakalabian. Yadzan is not coordinate. You go coordinate. You coordinate gav, yim bane sore coordinate. I mean, universal consciousness. Athandargav, Akhandargay, what a component was, Yazan is not lipi. Lipi, which differs. Lipi word is close proximity with Lepna Shreed Livun. Yem to the Vichanch. Sanskrit word, Lip Manzramut, Atandar Ye, Yamatoy Vichanch, Panamaj, Venya Az. Chuma Sibat Sersi Peri, they were the Pranyan Vaktano is a Karan, Atandar Sim Lepan Banaman, Britain with search. You should Burk Shabadishu Sharda in Shabadak. Yuzani Brit Milchu, your color, you should warrant you should Sharda on the warrant. And so it was such a Jaltatu Ivan Milan, Patos Ivan Furbanan, Patos Yematoy, which are Yematan Luvanize, soon to toy. Imagine a period which one covered better the Chunkulion. Gav Gitch, Sani, Basha, Yosan, Yosan Sharda, Lipi, each one covered better, Gassi the at such a Sanskrit, Bains and Barty, Basha, Shike, they Ivan is hyper like Punjabi, each one is hyper
South African language, she wanted to mother use an working tree, use an Jewish religious tradition as much as one dish. Arabic religious tradition, one Urdu was the Persian as one dish. Not if you want it's what poverty. Yem what is an change, yem what is an change, omnima, ya anima, but graphically, but apparently you deserve every recommendation. Use on your banomuchi, yem your banomuch, you were not that's a Suniljan banomuch, Timosh but a terms. As a teacher, Superman, touch thing word a perimeter, Yemana is by just patash, muscle ossul, emotional patash. Commissioning type of page of cheese, pata, ya in Bedish Majim identify my perimeter in Lafaz and what about really a cat first time at Habim say, yea, what is any more merge in snitch and behave by just snitch, while he can meal it shams. Other ye primary to ye quality shaker, the budget stage. How do I use Akshoshton Koshur, pay her truly? The cheese. Koshur to Hitchun, Koshur to Hitchun, Yakun to Hitchun, they booze an actual pronunciation cash. Using shop should you get what should pronounce from one character. I'm a Kurdish sign of racial determination. Methodology should Magatim Hataman, Haas, Hatam, Katam, influences are different under the influences of different emotions. I think you should change one, you should Bhasha Viganas approve. Yeah, cut Madinazar Face, Yenvatazania Kayala, Sata just tiny to us, when Bhasha Jitopinimas was Gatku Yotos, and that is the fact. Time but was the Kanlia can use Paranika, Shada Lipi was the Paranka. Beliki was in Saniman's and Timus from the academic point of view. Parani, you wish I'm structure catch. You see structure, why one of each is vertical. You doesn't mean Tanuk Saval, game of the Akinsan Dianas Manchasan, you catch a prosami Richmond June Ninterms. Game of the boss was like a Koshur Shaktibar. Timo me put testimony Saval, Medomas Hikit Korsha as Ahmed, Lipich. You the one should me one Yima Asi, it's but the most Panazana. Me pros authority is a world authority, she is a spiritual authority. Me pros money to me what the Diana's was in son, but no perish chose not. Game is a sharda post, or Piavlia. Then it's just a picture brought penny at eye, you go. At picture months which you should store component. Which is a sharda, access straight line, or better the children, but you hear better Bonavasan, the Chupata Athander point to angle tissue, Athander Chupata as much as you throw your pitching a town, Matra. Jazz Yelibana Puranata, but Chatan is when Hindia's mancha, Devnagras mancha also Patatravan for Zit, Rukish Travan, the Matra Chestrava, I get to have oh extension. It is just extension, touch one and is Matrika Puja. Yos Matrika Puja, Chesun, this is Kashmir shakt, understand Karnakadr. Tanuk Nyas, Yim Chasari Nyas, Pet first time, Yim Zan, Yim Shabache. Yaman Hund using Nyas by Angrezi placement. Yosan divine placement as a manchi. Yosan Shriras mancha, Anta Karnas mancha, Manas Patalas manchi, that Manas Patalas months. Yos I see image of Bananji, Yamakas, Yawan, I just Sampurnata Yamam Brahmiya, Chubrahanish. Yitai bird, Shivan Kerr. Yitai Port word, Yimship Sari, Yamzan Akwanza Shakti, Shakti PhD. Timuchi Yemani Shakal and a man's Akar and a man's garbage. I'm a cut of the proper word garbage. Akar man's garbage. Yem Pective Portuguese, it's divine revelation, divine manifestation, using grand aura of para Shakti, using him designing a universe for turning the test grabs. Yemis Misal as Chakrisha, Chakresha, the Hajatrava, Sazo Kadara, Padishava, Vachalakshmi Thapana, Sharikaja, each charm Sharda Pachida. Halankish Persian, Sanskrit, Koshur Shatander, Magar Lekun using charm, Yitu charm, using Rupa, using Kachatan Lalawak charm,
यम क्या बोजन पता शारदा पटी भास्कर राजन सबन इथे पट युजन यह ओसमत रूपा भवानी हिंद रहस्य उपदेश यह आव शारदा पटी गो लेखन पता देवनागरिस मज गव कशर जबान मंज शक्ति तिमन मंज ये वक्त जन यमो थव अमे खतर यजन डायरेक्टर मार्क्स आज वनान उदात अनुदात तो स्वजत सुई उदात अनुदात स्वजत ओस आमुत करन फर्स्ट टाइम गव सु इंट्रोड्यूस शिवनाथ शास्त्र कोशुर मगर यह त्रोकन देवनागरिस यह वन वन यह क्या शब्द तुम वो ये वक्त जन चूंकि थोड़ा बहुत उर्दू तो पोर्मुत हिंदी तो थोड़ा बहुत संस्कृत पोर्मुत ये वक्त जन अस कलम बनावान मज हेचनावान कलम बनावन यह कलम हालांकि पर्शियन वर्ड मगर अत लेखनी वनान वो वक्त गव वो लेखनी वनान मगर लेखनी हज रेफरेंस इन दे भवानी सहस्रनाम तथ अंदर तम सपोर्टिंग वर्ड थोमुत एंड दैट मीन लेखनी सु लेखा यस लेखनी यम सो लिखियो सु लेखा जैसा गई कैलीग्राफी सो कैलीग्राफी हंद लेखन वाल अत पे ज्यादा इम्पार्टेंस क्या भगवती हूं स्वरूप बनाव भगवती पान सुंदर सौम्या शीत वत्सला सिमित रूपाया साच अस्ते भगवती सच तम स्वरूप ये वक्त आकार मज अनव सु आकार रूद पत तथ सुंदरता मज वन तुम बूझो गई ब्या कत वन बह ये वक्त जन कलम गरान शारदा खतर लेखन खतर कलम युथि नरकुन तथ युथि कट दिवान यह जन वनान पत खत पर्शियन पट खत वनान अत वनान अत अनुदात कर ये वक्त गर हव कलम तथ वन क्या उदात पत गो अनुदात पत शिगाफ वनान डिवाइड कर अत अंदर मील रोजान सह गो सर बैलेंस कर गो ये वक्त जन नरकान सस लेखान अत अंदर त्रिशमी चीजों हुंद संयोग तम संयोग सने प्रयोगात्मक यह लेखन ये वक्त लेखन आव तम पे त्रो स्पेस सो स्पेस यो शारदास मज यह तमो सानियो ऋषियो वोनम इट इज यह पकन कम पे टाइम साइकिलस मज क्या ये वत अक अल्फाबेट पे अक वर्ण पे बेस वर्णस तान मिलना या तम पे शब्द बनो बे शब्द अम पे तुम वो पान तुम लेखन पूरे मेजर शेप हालांकि तुम मेनान यह कंडीशनिंग गम इथे पे कंडीशनिंग करने खतर अमन आवाजन हुंद अथ अंदर बह बड़ सठा खुश गोस ये वक्त जन ये बनो ये प्राइमर प्रवेशिका प्रवेशिका अत प्रवेशिका एंटर यह परा मे बासान यह शब्द कॉइन कोर्मुत हम परा प्रवेशिका मज क्या परा प्रवेशिका कश्मीर शैवजमस मज एंटर करान तम बेसिक टेक्स्ट दैट इज परा प्रवेशिका ये वक्त जन यह वन अस वक्त में 2022 यह कत किताब गई इंट्रोड्यूस इट इज द बेस्ट वर्ड यूज्ड एंड चोजन फॉर दैट सिस्टम एंड फॉर्मेट अत फॉर्मेटस मज यह आज ऑल ई टेक्नोलॉजी अमे ई टेक्नोलॉजी सत बने यह सुंदर पे बने अत अंदर बड़ी एफर्ट कर एज ए टीचर बस यमो शक्ल तम अंग्रेजी पोट तक लोकमुत हिंदी पोट पे शारदा पोट अत शारदा हिंदिस माता शारदा हिंदिस अजकिस दोहस पे कर मे कुल गीतम लोकमुत शारदा अथ कुल गीतम नमस्ते शारदाम देवी काश्मीरे सुर पूजताम ज्ञान विज्ञान परदात्रीम प्रकाश विमर्श कराम शांडिल्य आदि वीर मुनि सनक आदि सेव्यताम वेद आदि शास्त्र वचनै प्रतिपदम पूजमाना नमामि शारदाम देवी काश्मीरे प्रवासिनीम काश्मीरे सुर पूजताम ज्ञान विज्ञान परदात्रीम प्रकाश विमर्श कराम सार सुख स्वरूपाम ताम त्रिकाचार्युताम पराम शैवे शाक्ते संस्कृते च त्रिविपूजताम शिवाम नमामि शारदाम देवी काश्मीरे सुर पूजताम ज्ञान विज्ञान परदात्रीम प्रकाश विमर्श कराम स्मिताम बड़ सुंदरता है मज बड़ प्यूरिटी स्मिताम शारद लिपिस्थाम सही शकत मो शारदा ये कत स्मिताम शारदा लिपिस्थाम शारदा लिप मंज चोन वास
हम संगीत पराम शुभाम इस पर का हम छासान प्यूरिटी में सो सत्व स्वरूप आसान पराम गयो से ट्रांसेंडेंटल स्टेज शुभाम गयो कल्याण दनवागी सप्रबी मात्र का चक्राम चों पूजा स्थान मात्र का अवशिष्ट यजन वना सप्तभी मात्र का यजन सप्त मात्र का चवना वर्णात् मिकाम सुशोभनम पतुचिम सप्त मात्र का यमा तमिक शेप because of formation chuniwan ishniwa varna namami sharadam agamasu tiyam gauri parvitne shubhe snatakanam dikshante kul geetam nivediye ज्ञान विज्ञान परदात्रीम प्रकाशमर्शकराम ये प्रकाशमर्श सोन सोरी चीज अगर मंथन करो कश्मीर शहर दर्शन तच प्रकाश अगर वेदस मंथन करो तच चीज सत्यम तो ऋतम पे अगर तुम पुराण मंथन करो तच क्या अथ वन तच ईश्वर स्वरूपस मज पन पान भक्ति मज ये वक्त जन पत वुचान आजकल ई टेक्नोलॉजी मज पन पान आइडेंटिफाई वुचन कि कस कस चीज सान खतर योग जन कोशुर पन भाषा संस्कृति अंदर संस्कृत गर्भ बन कुन जाए जन मे पन थोड़ा बहुत पोर या जन मे मौका मोल अंडरस्टैंड कर शाक्त दर्शन करनस मज तंदर संपूर्णता पूर्णता पूर्णता बूजु मान कत सदा धन्यवाद यह मान उद्गार शब्द यम समर्पित स्वामी लक्ष्मी ओम शांति ओम महाराज शुक्रिया महाराज थैंक यू we listen to Dr. Chamanlal ji. I think the way he presented, the way he has been a guiding principle for our team. We have been working. In fact, mere guru ke jaise hai, and the guidance which I have taken. And another point which I want to highlight, I think it is your humbleness that you mentioned about the book name Koshur Praveshika. Just for information of everybody, this name was given by Dr. Chamanlal Raina ji only. So yes, definitely, this is Koshur Praveshika. Now to just to summarize, I would say yes, wonderful. I really want to thank our honorable guest Sudhir ji, Bhasha Sumbli ji, Dr. Chamanlal Raina ji, to honor us in their presence and have a program with us. Using Koshur Praveshika, as Dr. Chamanlal ji pointed out himself, I think it is the consciousness of our culture. It is the consciousness of our roots. Basically, it's a step towards connecting to the whole of our consciousness, to our roots, and Panin Sanskriti sit wapas jod. So, ten khatre yosi kitab winkenas our in approach. I would say first approach for us is not to regularize it with individuals first, but we need to approach the institutions first. We will approach each and every institution. We will approach all academic centers to introduce this primer, especially at least first in the state of Jammu and Kashmir, where our request will be them. They can teach Sanskrit, they can teach Koshur in Sharda Lipi as a third language. If in our country we are allowed to learn French, German, why not our own Supan Koshur kaise konesh parit. To give Koshur paruncha as one step karun Sharda Lipi se. I think this is the journey, and you journey using this own safar you go and this has opened a window, or a window when I hope this will open many scholars. Yeli Sharda Lipi Sanyan Shuranish Vati, then they will jo hum Sharda Lipi ka prachar karte hai, jo Sharda Lipi padhate hai with this Kashmiri language also. We have confidence that it is not only in the spiritual content or only in the philosophical content. We will open the field in terms of the drama,
the art, the music, everywhere. I think for that, this Koshur Praveshika is a step towards that. It is the first step towards that. And once again, just before concluding this program, may I humbly thank all of the team members, my team members. I thank all the team members who had participated, who had worked with us in developing this Praveshika, Dr. Ashok Khajanji, Sanjay Panditaji, and the team, many more teams. And in fact, we should also, my humble thanks to also Shri Anupam Kherji to provide for their, I know they were very busy. We were even trying to get them for this program, but they still took time to provide us the forward for this book. I think this is an honor for all of us, and definitely this honor, उनका आशीर्वाद, आप सब लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ ऐसा रहेगा कि we will never disappoint you. We will continue this work and this will go to future generation. Future generation will take it much further and this journey will go and go on. Thanks once again and namaskar and Urzu. Namaskar. Thank you. We close the program here. Okay, thank you everybody. Devi. Thank you, everybody. Everyone can leave right now, actually. Thank you. Thank you so much.